कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन से होते हैं? सूचनाओं का विश्लेषण, जैसे कि व्यक्ति प्राप्त जानकारी को केवल स्वीकार नहीं करता बल्कि उसकी गहराई में जाता है और वह स्रोतों को विश्वसनीयता, तथ्यों की प्रामाणिकता और संदर्भ का सूक्ष्म परीक्षण करता है। तर्कों का मूल्यांकन करता है। दूसरा बिंदु आता है समालोचनात्मक चिंतन। किसी भी दावे या विचार के पीछे के तर्कों को सावधानी पूर्वक जांचता है। वह तर्कों की तार्किक संरचना, सबूतों, प्रमाणों की, है ना, पर्याप्तता और निष्कर्षों की वैधता का मूल्यांकन करता है। फिर पूर्वाग्रहों की पहचान की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसमें व्यक्ति अपने और दूसरों के अचेतन पूर्वाग्रहों को पहचानता है। वह अपनी सोच में छिपी पूर्व धारणाओं और संकीर्ण दृष्टिकोणों को देता है। तार्किक निष्कर्ष की बात करें तो अंततः समालोचनात्मक चिंतन का लक्ष्य सबूतों, नीति, प्रमाणों और तर्कों के आधार पर वस्तुनिष्ठ और तार्किक निष्कर्ष निकालना है। यह न केवल अंतर्ज्ञान पर बल्कि विश्लेषणात्मक क्षमता पर निर्भर करता है। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसा कौशल है जो व्यक्ति को अधिक जागरूक, विवेकशील और बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करता है। यह शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्याय का संदर्भ। सामाजिक न्याय एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो समाज में समानता और न्याय के मूल सिद्धांतों को संबोधित करती है। समालोचनात्मक चिंतन के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक न्याय को गहराई से समझने के लिए विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। में हम विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ केवल समान आय नहीं बल्कि की समानता और संसाधनों तक उसकी पहुंच है। आर्थिक असमानताओं को कम करने पर केंद्रित होता है। ये शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक अवसरों में समान पहुंच सुनिश्चित करता है। आर्थिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा देता है। से सामाजिक समावेश समाज के सभी वर्गों और समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना, सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध संघर्ष, भेदभाव का उन्मूलन। भेदभाव के उन्मूलन में निम्न पहलू शामिल होते हैं, जैसे लिंग, धर्म, यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना, कानूनी और संस्थागत तंत्रों द्वारा समान अधिकारों की गारंटी, सकारात्मक कार्यवाही और आरक्षण जैसी नीतियों का कार्यान्वयन करना। मानवाधिकारों का संरक्षण, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना, कानूनी और न्याय व्यवस्था की समानता, शोषण और अन्याय के विरुद्ध संरक्षण। आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से सामाजिक न्याय को एक गतिशील और निरंतर विकासशील अवधारणा के रूप में देखा जाता है। यह समाज में मौजूद असमानताओं और अन्यायों को चुनौती देने और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया है। किंतु यह है कि सामाजिक न्याय एक स्थिर लक्ष्य नहीं है, एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें समाज को लगातार अपने संरचनात्मक पूर्वाग्रहों और असमानताओं पर प्रश्न उठाने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता होती है। अब हम समालोचनात्मक चिंतन के घटकों की बात करें तो सबसे पहले आता है तार्किक विश्लेषण, एनालिसिस। तर्कों की वैधता का मूल्यांकन तार्किक विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल तर्कों की वैधता का गहन मूल्यांकन है। इसमें निम्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला, तर्क के निष्कर्ष और प्रमुख दावों की पहचान करना। तर्क में प्रयुक्त तर्क श्रृंखला की तार्किक संरचना का विश्लेषण करना। तर्क में निहित अंतर्निहित मान्यताओं की पड़ताल करना और तार्किक त्रुटियों और भ्रामक तर्कों की पहचान करना। प्रमाणों का गहन परीक्षण। प्रमाणों के परीक्षण में निम्न महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होते हैं। प्रमाणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का मूल्यांकन, स्रोतों की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता का आकलन, प्रमाणों के बीच संबंधों और असंगतताओं की पहचान करना, संदर्भ और परिप्रेक्ष्य के आधार पर प्रमाणों का व्यापक मूल्यांकन करना। आता है निष्पक्ष विश्लेषण। निष्पक्ष विश्लेषण के मुख्य तत्व आते हैं व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर विषय का मूल्यांकन करना, विभिन्न दृष्टिकोणों को समान महत्व देना, वैकल्पिक व्याख्याओं और संभावनाओं पर विचार करना, निष्कर्षों को केवल मजबूत प्रमाणों के आधार पर निकालना। पूर्वाग्रह पहचान। पूर्वाग्रह पहचान व्यक्तिगत और सामाजिक पूर्वाग्रहों की पहचान करना। पूर्वाग्रह
पहचान में महत्वपूर्ण कौशल है अपने स्वयं के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के प्रति जागना, सांस्कृतिक और सामाजिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के प्रभावों को समझना, मीडिया, शिक्षा, सामाजिक संरचनाओं इत्यादि द्वारा प्रभावित पूर्वाग्रहों की पहचान करना, विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों को पहचानने के लिए आत्मचिंतन करना। इसके बाद आता है स्वचिंतन की क्षमता। स्वचिंतन के महत्वपूर्ण पहलू हैं अपने विचारों, निर्णयों पर निरंतर प्रतिबंध करना, अपनी मान्यताओं और धारणाओं पर सवाल उठाना, को स्वीकार करने और सीखने की क्षमता, लगातार अपने ज्ञान और समझ को अपडेट करते रहना, बहुआयामी दृष्टिकोणों का विकास में प्रमुख रणनीतियां हैं शामिल हैं विभिन्न संदर्भों और परिप्रेक्ष्यों से किसी विषय को समझना, विपरीत दृष्टिकोणों को सुनने समझने की तत्परता रखना, जटिल मुद्दों में निहित बहुस्तरीय जटिलताओं को समझना, एक तरफा सोच से बचना और बहुआयामी समझ को विकसित करना। हम देख सकते हैं कि समालोचनात्मक चिंतन एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जो तार्किक विश्लेषण और पूर्वाग्रह पहचान पर आधारित है। यह न केवल ज्ञान के मूल्यांकन में मदद करता है बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गहन समझ विकसित करने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय में समालोचनात्मक चिंतन के। सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक असमानताओं का विश्लेषण। इसमें संरचनात्मक असमानताओं की पहचान, समालोचनात्मक चिंतन सामाजिक असमानताओं की जड़ों को समझने में मौलिक भूमिका निभाता है और यह केवल सतही लक्षणों को पहचानने तक सीमित नहीं रहता बल्कि उन संरचनात्मक कारणों की गहन जांच करता है जो असमानताओं को जन्म देते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में यदि हम देखें तो समाज में मौजूद असमानताओं के ऐतिहासिक निर्माण को समझना, शक्ति संरचनाएं में देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को वितरण विश्लेषण करना, संस्थागत व्यवस्थाओं को यदि हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में मौजूद असमानताओं की पड़ताल करना। और शोषण के तंत्रों का विश्लेषण, समालोचनात्मक चिंतन शोषण की जटिल तंत्रों को उजागर करने में भूमिका निभाता है। बहुआयामी दृष्टिकोण शोषण के आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं का समग्र विश्लेषण करना। अंतर संबंधित असमानताएं जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आदि के बीच परस्पर जुड़ी असमानताओं की पहचान। गतिशीलता की बात करें तो सामाजिक संबंधों में असमान शक्ति वितरण का अध्ययन है। समाधान की रणनीतियां यदि हम देखें तो विश्लेषण के पश्चात समालोचनात्मक चिंतन व्यापक समाधान की रणनीतियां भी विकसित करता है, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन, मौजूदा सामाजिक संरचनाओं में गहन सुधार, सशक्तिकरण रणनीतियां, वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम, नीतिगत हस्तक्षेप, भेदभाव को कम करने वाली लक्षित नीतियों का निर्माण करना। नीतिगत निर्माण, न्यायपूर्ण नीतियों का निर्माण, समालोचनात्मक चिंतन नीतिगत निर्माणों से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आता है सबसे पहले समावेशी दृष्टिकोण, विभिन्न सामाजिक समूहों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को शामिल करना, न्याय केंद्रित दृष्टिकोण सामाजिक असमानताओं को दूर करने में केंद्रित करता है, लचीली नीति निर्माण जिसमें बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों में संशोधन करते रहना। सामाजिक परिवर्तन के लिए रणनीतिक योजनाएं भी शामिल हैं। समालोचनात्मक चिंतन सामाजिक परिवर्तन की व्यापक योजना विकसित करने में मदद करता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण की तरफ हम देखें तो तत्काल समाधान के बजाय भूतपूर्व मूलभूत परिवर्तन ध्यान देने योग्य है। बहुस्तरीय हस्तक्षेप, व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत स्तरों पर समन्वित कार्य करना, सामाजिक जागरूकता जिसमें सामाजिक असमानताओं के प्रति जनचेतना विकसित करना, उसके बाद संस्थागत भेदभाव को विखंडन, समालोचनात्मक चिंतन संस्थागत भेदभाव देने के में भूमिका निभाता है, जिसमें नीतियों का पुनर्निरीक्षण होता है, समानता और समावेश को बढ़ावा देने वाली संस्थागत संस्कृति का निर्माण करना होता है, नीतियों के प्रभाव का निरंतर मूल्यांकन करते रहना है। अतः सामाजिक न्याय में समालोचनात्मक चिंतन एक शक्तिशाली पद्धति है या हम उपकरण भी इसको कह सकते हैं, जो असमानताओं को समझने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें दूर करने के लिए व्यापक रणनीतियां विकसित करने में मदद न केवल मौजूद असमानताओं को उजागर करता है बल्कि उनके समाधान के लिए रचनात्मक और व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। तरीके से हम निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समालोचनात्मक चिंतन सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण पद्धति है या उपकरण है, जिसमें हम एक गहन समझ विकसित कर सकते हैं और पूर्वाग्रहों को चुनौती हम दे सकते हैं और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में हम एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
शुभंकर, गो अहेड। ओके सर, ओके सर, ओके सर, धन्यवाद। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट, if any question is there, any query is there, that can be also resolved. So she has presented very nice paper on सामाजिक न्याय and the critical thinking in सामाजिक न्याय, समालोचनात्मक चिंतन सामाजिक न्याय में. Regarding this, if you are having any question or any query, any doubt, so those things can be resolved here now. Then go ahead, Dr. okay Subhankar. sir. Oh, sir. Dr. विनोद बिहारी मल्लिक. श्रीमान नमो नमः. ओके. श्रीमान नमो नमः. मम नाम डॉक्टर विनोद बिहारी मल्लिक. जातीय आलोचनचक्रे समुपस्थिताः मान्याः सभापतयः, समुपलब्धाः सम्पानसत्रस्य सञ्चालकाः, विद्वद्वरेण्याः, अध्यक्षपादाः, तत्र अंतर्जालीय क्षेत्रे जे समुपस्थिताः समग्र भारतवर्षे विद्वांसः, सर्वेषां कृते मम प्रणामः. महतः हर्षस्य विषयः यत् अहं विनोद बिहारी मल्लिकः सर्वकारीय महाविद्यालय सुंदरगढ़ ओडिशा राज्ये असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण कार्यं करोमि. तत्र सम्पान सत्रे मदीय विषयः अस्ति प्रायोगिक ध्वनि विज्ञानम् एकम् अनुशीलनम्. तस्मिन् विषये अहं वच्मि. न जाने कदा मानवीय भाव विनिमयः संजातः, कदा वा भाषा सृष्टा, परन्तु भाषाशास्त्रिणः मतानुसारं प्रथमम् अस्पष्टा ध्वनिः, तथा इंगित आकारेण एव तस्य पररूपं प्रादुर्भूतम्. अनन्तरं यदा मनुष्यः उन्नतः बुद्धिसम्पन्नः च संजातः, तदारभ्य कथितभाषाः सृष्टाः एव. ततः सा कथितभाषा पुनः परवर्तिनि काले लिखितभाषारूपेण पूर्णतां प्राप्नोति. न केवलं मनुष्येषु इयं भाषा दृश्यते, अपितु प्राणिमात्रेषु अपि अस्याः स्वरूपं, ध्वनिमात्रेषु अपि अस्याः स्वरूपं, ध्वन्यादि माध्यमेन अस्याः उत्पत्तिः भवति एव. भाषा ही जनानां भावाभिव्यक्तये सशक्तं साधनम् अस्ति. एकस्याः कस्याचित् भाषायाः कार्यदृष्ट्या, स्वरूपदृष्ट्या, प्रतिपादन दृष्ट्या, संघटन दृष्ट्या च मूल्यांकनं कर्तुं शक्यते. तदा चत्वारः विभागाः परिकल्पिताः भवन्ति. भाषा वैज्ञानिक विचार दृष्ट्या ते इत्थमेव परिकल्पिताः, यथा ध्वनि विज्ञानं, रूप विज्ञानं, अर्थ विज्ञानं, वाक्य विज्ञानमेव. तत्र भाषा इत्युक्ते किं? भाषा ही जनानां भावाभिव्यक्ते सशक्तं साधनम् अस्ति. अन्यैरपि चेष्टादिभिः साधनैः भावाभिव्यक्ते तु सम्भवति. भाषा एव सा शक्तिः जया शक्त्या मनुष्यः प्राणवन्तः भवति, स्वात्मनः कार्यं कर्तुं सम्पादयति च. पशुतः भिन्नं प्रतिभाति, सा एव वाक् नाम दैवीशक्तिः इति उच्यते. भाषा ही समुदायस्य महान् वाङ्निधिः इति उच्यन्ते. तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति इति. अतः भाषा विज्ञान विषये मम विषयः अस्ति. तत्र भाषा विज्ञानेषु मुख्यं भवति ध्वनि विज्ञानं. ध्वनि विज्ञानेषु ध्वनि विज्ञानं तावत् अत्यन्तम् अनुपमम् अनन्यं च. ध्वनति, ध्वनयति, ध्वन्यते, ध्वननम् इति व्युत्पत्त्या ध्वनिः शब्दः गृह्यते. तत्र ध्वनिः शब्दः शब्देन गृह्यते. तत्र च शब्दः व्यक्ताव्यक्तत्वेन स्वीक्रियते. व्यक्त अव्यक्त उभयत्र ध्वनि शब्दस्य व्यवहार लोके एव प्रचलति. यथा अव्यक्त ध्वनिषु कंकण नूपुरादयः श्रीयन्ते. व्यक्ताध्वनेः तु विकृत अविकृत भावेन उच्चार्यन्ते. विकाराः व्यक्तध्वनिषु एव परिलक्ष्यन्ते, परन्तु व्यक्ताव्यक्त ध्वनि शब्दः एव प्राणिमात्र व्यवहार उपयोगी सिद्ध इति कर्तुं शक्यते. ध्वनि विज्ञानस्य परिभाषा अपि आचार्येण कपिलदेव महोदयेन स्वकीय प्रबन्धे दत्ता अस्ति. ध्वनि विशेषणं शिक्षा वर्णनं च विभाजनं
परिवृत्त्यादि इतिहासश्च ध्वनिविज्ञानम् उच्यते। ध्वनिविज्ञानं भाषाशास्त्रस्य प्रमुखम् अंगं वर्तते। आङ्ग्लभाषायां ध्वनिविज्ञानं फोनोलॉजी फोनेटिक्स इति शब्दौ प्रचलितौ। ग्रीक भाषायां फोन इति शब्दस्य अर्थः ध्वनि अस्ति इति उच्यते। संस्कृत शब्दः संस्कृत मूलधातुः भण धातुः तत्र भ इति स्थाने फ इति तत्र ध्वन्यात्मकेन एव शब्दस्य सृष्टिः येन सामान्येन कर्णगोचरः कोऽपि शब्दः श्रूयते। भाषाविज्ञाने ध्वनि एव सामान्य ध्वनिभ्यः भिन्नम् इति कर्तुं पाद्यते। मम विषय अस्ति प्रायोगिक ध्वनिविज्ञानम् एकम् अनुशीलनं। तत्र प्रायोगिक ध्वनिविज्ञानस्य अध्ययनं विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महत्त्वपूर्णं योगदानं ददाति। अयं विषयः न केवलं शास्त्रीय अध्ययनाय अपितु आधुनिक प्रविधीनां विकासाय च अपि उपयुक्तः भवति। अतः अस्य अनुशीलनं विज्ञानानुरागिणां कृते उपयोगी अस्ति तथा संगीतानुरागिणां च कृते उपयोगी अस्ति। तेषां कृते अत्यन्तं लाभप्रदं विद्यते। अस्य प्रयोगः सञ्चारप्रणालीषु चिकित्सायां स्थापत्यविज्ञाने तथा औद्योगिकक्षेत्रे अपि कर्तुं पार्यते। ध्वनिविज्ञान भौतिकशास्त्रस्य एकं महत्त्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति। तत्र ध्वन्याः उत्पत्तिः ध्वन्याः प्रसारः तथा गुणधर्मः अध्ययनं कर्तुं शक्यते। प्रायोगिक ध्वनिविज्ञानं तस्य एकः उपविभागः अस्ति। तत्र प्रयोगाधारितम् अध्ययनं प्रमुखं भवति तथा नवीनानां सैद्धान्तिकतत्त्वानां परीक्षणं पर्यालोचनं तत्त्वानां विश्लेषणं वैज्ञानिक अनुध्यानं प्रायोगिकक्षेत्रस्य अनुप्रयोगम् इत्यादिकं सर्वमेव तस्मिन् स्थले विद्यमानमेव। अयं विषयः न केवलं भौतिकशास्त्रेषु अपितु संगीतशास्त्रे स्थापत्यशास्त्रे औद्योगिकक्षेत्रे सञ्चारप्रणालीषु च दरीदृश्यते। ध्वनि केवलं मानवजीवने मनोरञ्जनाय न अपितु वैज्ञानिकानां कृते अतीव महत्त्वपूर्णः अस्ति। ध्वन्याः विशेषताः प्रसारणं परिवर्तनम् अपवर्तनम् अवशोषणम् इत्यादीनि व्यावहारिकरीत्या अध्ययनं प्रायोगिक क्षेत्रस्य ध्वनिविज्ञानस्य कृते मुख्यं स्थानम् अधिकरोति। प्रयोगः ध्वनिविज्ञानस्य मूलाधारः भवति इति वक्तुं शक्यते। प्रयोग आधारितम् अध्ययनं ध्वनिसंवेदनयन्त्राणाम् उपयोगः तथा सैद्धान्तिक धारणानां परीक्षणं तत्र प्रमुखं बिन्दुः अस्ति। अस्मिन् अवसरे तत्र ध्वनिविज्ञानः भाषायाः विभिन्नानां ध्वनीनाम् अध्ययनं करोति। उच्चारण शिक्षां च ददाति। अनेन मनुष्यः उच्चारण सम्बन्धीय ज्ञानं प्राप्नोति। उक्तं च महाभाष्ये एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। ध्वनिभेदानां ज्ञानेन व बकार स्वकाराणां च भेदः विविधेषु क्षेत्रेषु वर्णानां जायमानः दोषः परिवर्तयितुं शक्यते। यत्तु भगवता यत्तु उच्यते काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्र विशारदं। तत्र पाणिनिना यत् व्याकरणम् उद्दिष्टम् उपदिष्टं च तेनैव माध्यमेन ध्वनिविज्ञानस्य महत्त्वपूर्णं गुरुत्वपूर्णं तथ्यं वयं प्राप्तुं शक्यते। अतः उच्यते यद्यपि बहुनाधीश तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनमाभूत् सकलं सकलं सकृत् सकृत्। विश्वस्य विभिन्नानां भाषाणां शिक्षणे ध्वनिविज्ञानम् अत्यन्तम् उपकारकं सहायकम् अत्यन्तं लाभप्रदं च। ध्वनिविज्ञाने त्रयाणां पक्षाणां मुख्यतः लक्षणं द्योतयति। एकं भवति विश्लेषणम् अपरं वर्णनं तृतीयं भवति वर्गीकरणं। भाषाणां शुद्धलेखने शुद्धोच्चारणे च ध्वनि शिक्षा सहायिका भवति। प्राचीनानां अर्वाचीनानां ध्वनीनां क्रमविकासस्य इतिहासः ध्वनिविज्ञानस्य साहाय्येन निर्धारणं कर्तुं शक्यते। ध्वनिविज्ञानं ध्वनिपरिवर्तनस्य कारणात् स्पष्टं करोति। ध्वनिविज्ञाने विविधभाषाणां सम्बन्धं ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। भाषायाः ऐक्यं कर्तुं शक्यते। यथा संस्कृत आङ्ग्लभाषाया अस्ति त्रि शब्दाः तथैव आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति थ्री तथैव वो तत्र काव् पितृ फादर भर्तृ ब्रदर मातृ मदर इत्यादयः शब्दाः वयं परिकल्पयितुं शक्यते। तत्र ध्वनेः सामञ्जस्यः अस्ति। मानवस्य उन्नतेः अवनतेः वा इतिहासं द्योतयति ध्वनिविज्ञानं। ध्वनिविज्ञानेन भाषायाः विशेषता विज्ञायते। यद्यपि प्रत्येकस्य भाषायाः स्वकीया विशेषता अस्ति। ध्वनिविज्ञानं प्रमुखविषयः अस्ति। तत्र तरङ्गात्मक ऊर्जारूप अस्ति। यः वस्तूनां कम्पनं
द्योतयति उत्पद्यते च सर्वप्रथमम् आत्मा बुद्धेः सम्पर्कं प्राप्नोति तथा च सः मनः स्वस्य इष्टार्थस्य अभिव्यक्तिं कर्तुम् इच्छया सह प्रेरयति मनः शारीरिकं बलं प्रेरयति यद् वायुतले प्रेरणा सुजति एषः प्रेरितो वायुः वक्षस्थले अर्थात् हृदयं गच्छति तथा च मन्द्रा शब्दं जनयति वायु उपरि आगत्य अवरुद्धः सन् मुखं प्राप्य विविध भावेन विभक्तः सन् भाषारूपेण प्रयुञ्जते परावाङ्मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिता हृदिस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठदेशगा वैखर्या हि कृतनाद परश्रवण गोचरः इत्यादि अपि तत्र भर्तृहरिणा स्वकीय वाक्यपदीये अति सुष्ठुरूपेण प्रतिपादितं विद्यते जद् अपि दार्शनिक विचार दृष्ट्या अत्र सम्पान यत्र दार्शनिक तत्व विषय विश्लेषणं जायते तत्र एषा ध्वनिः तत्र वाक्यपदीये सुष्ठु भावेन विचारितं जायते आत्मा सूक्ष्म वाक्रूपेण विद्यते सः स्वरूपं व्यञ्जयितुं शब्दरूपेण परिणमति विचाररूपेण परिणमयति शरीरस्य तापेन ओतप्रोत भूत्वा प्राणवायुं जनयति तदनन्तरं स उत्तिष्ठति ग्रन्थिं विभज्य पृथक् पृथक् शब्देषु परिणमति एवं प्राणाः वर्णान् अभिव्यञ्जयति तेषु लीनः च विभवति मनुष्येषु चैतन्यत्वमेव भाषां जनयति बुद्ध्या विना चैतन्यमेव कार्यं कर्तुं न शक्नोति इति कारणतः प्रज्ञा विवेक अभाव शून्यादेव पक्षिणां पशुपक्षिणां च भाषायाः अभावः दृश्यते यद्यपि तेषां भाषा अस्ति वयं तत् बोद्धुं न पारयामः परन्तु मनुष्येषु चैतन्य बुद्धेः समन्वयः जायते अनेन माध्यमेन विचाराः अभिव्यक्तिं कर्तुं समर्थाः वयं भवामः एतेषां कृते प्रेरक कारकं भवति मनसः प्राणबलस्य वायोः आश्रयणेन स्वर अंगस्य नियमित संचालनेन च शब्दं जनयति एवं शब्द उत्पादनार्थं चत्वारि तत्त्वानि आवश्यकानि तत्र एकः भावः अपरः विवक्षा तत्र प्राणवायोः समर्थनं स्वरतन्त्रस्य नियमितं संचालनम् एतानि चत्वारि वस्तूनि मनुष्येषु दृश्यन्ते चेतनतत्त्वद्वारा प्राप्ताः भावनाः मनसः माध्यमेन गतिं प्राप्नुवन्ति ते वायुमार्गेण बहिः आगच्छन्ति तथा च ते स्वरमाध्यन्तर माध्यमेन सम्यक् ध्वन्यात्मकं रूपं प्राप्नुवन्ति प्रोफेसर लुई ग्रे इत्यनेन स्वस्य पुस्तके फाउंडेशन्स ऑफ लैंग्वेज इति पुस्तके एकस्य व्यक्तेः विचारः अन्यस्य व्यक्तेः समीपं कथं गच्छति इति व्याख्यातुं तत्र ध्वनिविज्ञानं साहाय्यं करोति वक्तुः श्रोतृः च अवधारणं प्रकाशयितुं शक्नोति प्रथमं वक्तुः मनसि दृश्यते अनन्तरं तत्र श्रोतृः कर्णपटले तत् श्रवणतंत्र माध्यमेन तत् शृणोति एवं अनन्तरं बुद्ध्या तत् प्रकाशयति प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान अनुशीलनावसरे भाषा विज्ञानस्य सामान्य अध्ययनाय किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम् अस्मिन् विज्ञानयुगे अनेकाः अवर्णनीयाः असम्भवाः विषयाः तत्र अव्याख्याताः विषयाः अनुपलब्धाः विषयाः सन्ति तान् अनुपलब्धान् विषयान् बहिष्प्रकाशनम् एव उद्देश्यं भवति सम्पादनसत्रं तत्र ध्वनि विज्ञानं साहाय्यं करोति भाषा विज्ञानस्य छात्राय भौतिकशास्त्रस्य तत्र शब्दतन्त्रस्य उच्चारणस्थानस्य उच्चारित ध्वनेः ग्रहणं कर्तुं सहायकं करोति तत्र भौतिकशास्त्रस्य नाम अकूस्टिक फोनेटिक्स इति उच्यते तत्र हिंदी भाषायां श्रवणशास्त्रं श्रवणविज्ञानं तरङ्गध्वनिविज्ञानं सांवाहिक ध्वनिविज्ञानं संचारिकी विज्ञानं तत्र भौतिक ध्वनिविज्ञानम् आदि इत्यादीनि भावेन विभिन्नानि वक्तुं पार्यते तत्र विश्लेषणेन तस्य अधिक लाभः भविष्यति अनन्तरम् अस्ति अधुना वक्ता उक्ताः ध्वनयः तरङ्गगत्या श्रोतुं कर्णालं प्राप्नुवन्ति तान् गृहीत्वा तेषाम् अर्थम् अवगच्छन्ति अस्मिन् सन्दर्भे एता ध्वनि तरङ्गाः अतीव महत्त्वपूर्णाः सन्ति एतेषां शब्दतरङ्गाणां चित्राणि विविधैः यन्त्रैः गृह्यन्ते तेषां विश्लेषणेन ध्वनेः आवृत्तिः तरङ्गस्य दीर्घता तत्र अहर्निशम् आप्नुवन्ति तेषु मुख्याः सन्ति तस्य स्वरः आयत्तनः अनुनादः वा प्रतिध्वनिः अन्तः आगच्छन् वायुशक्तिम् उच्चारणतत्त्वानां रचना तेषां ध्वनिविषयशक्तिं प्रदच्छति तत्र जो अस्ति पेलोटोग्राफ नववाद्यानां तुलनायाम् अतीव महत्त्वपूर्णं वाद्यं विद्यते अस्मिन् कृत्रिम तालु प्रयोगः भवति उच्चारण समये जिह्वा कृत्रिम तालुं स्पृशति तस्य स्थानस्य वर्णः जिह्वायां
प्रयुज्यते चेत् कृत्रिमतालुषु चिह्नं भवति सावधानतया बहिः निष्कास्य तस्य चित्रं गृह्यते एवं तस्य शब्दस्य उच्चारणं स्थानं निर्णीयते अयं विधिः उच्चारणस्थाननिर्णये विशेषणतया उपयोगी अस्ति अधुना तत् पद्धतिम् उत्तमं कर्तुं टेलिटोग्राफ प्रोजेक्टर इति यन्त्रस्य उपयोगः क्रियते एतेन तस्य चित्रं यन्त्रात् एव गृह्यते वयं पश्यामः किं काइमोग्राफ यन्त्रं वर्गाकारः यन्त्रवत् एका पेटी अस्ति तत्र उपरि गोलः ढोलः विद्यते धूमेन कृष्णीकृतं स्निग्धं कागदं तस्मिन् वेष्टितम् आसीत् समीपे लघुयन्त्रमपि अस्ति एतत् यन्त्रम् उच्चैः स्पन्दनभेदं स्पष्टतया दर्शयति अस्वर ध्वनि उच्चारणे ऋजुरेखा निर्मीयते तरङ्गाः तत्र न सन्ति घोषध्वनयः उच्चारणे लहरः उच्चारणे तत्र तरङ्गाः भवन्ति अनेन माध्यमेन ह्रस्व दीर्घ उच्चारणयोः कालान्तरं ज्ञायते एतेन प्रत्येकस्य शब्दस्य उच्चारणार्थं यावत् समयः भवति इति ज्ञातुं साहाय्यं करोति अपरम् आगच्छति क्रोमोग्राफ तथैव एक्स्रे टेप रेकॉर्डर एंडोस्कोप इत्यादिषु अपि आधुनिक यन्त्राणि तत्र ध्वनिविज्ञानस्य महत्वोपकारके ध्वनिविज्ञानस्य वा प्रायोगिक ध्वनिविज्ञानस्य महत्वपूर्ण भूमिका विद्यते अधुना कंप्यूटर ध्वनिविज्ञान शाखा ध्वनि प्रयोगशालासु तत्र संगणक यन्त्रस्य उपयोगितायां बलं दत्तं भवति ध्वनि विश्लेषणस्य कार्यं बहु सम्यक् करोति भाषा विज्ञानस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु अनुवाद क्षेत्रेषु शब्दकोशशास्त्रेषु पाठशास्त्रेषु व्याकरणादिषु च सर्वेषु क्षेत्रेषु अयम् अतीव उपयोगी अस्ति सिद्धः अस्ति एव अयं संगणकः सर्वविधं गणनाकार्यं सम्पन्नं करोति अनेन माध्यमेन प्रयोगशालाः ध्वनिं विहाय अन्येषु विषयेषु कार्यं करोति तत्र कंप्यूटर यन्त्र माध्यमेन यन्त्रस्य उपयोगः कर्तुं तस्य प्रयोगः वर्धनाय ध्वनेः महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति अतः गणना भाषा विज्ञानं तत्र ध्वनि विज्ञानं माध्यमेन गणना भाषा विज्ञानं कर्तुं पारयामः तत्र अपरमपि सोनोग्राफ यन्त्र ध्वनि प्रयोगशालायाः कृते तथा अति आवश्यकम् अतीव उपयोगी यन्त्रमस्ति अमेरिका देशात् आयातमस्ति एतत् माइक्रोफोन यत् किमपि शब्दं भाष्यते एतत् यन्त्रं तत् शब्दं गृह्णाति यद् वचनं भाष्यते तत् यन्त्रेण पुनरुक्तं भवति एतेन वक्तुः आश्वासनं भवति यत् तेन उक्ताः शब्दाः सम्यक् रूपेण स्वीकृताः अस्य कार्यविधिः टेप रेकॉर्डर सदृशा एव अस्ति तत्र फॉर्मेट मेशिन जो फॉर्मेट ग्राफिक मेशिन एतत् यन्त्रं निर्माणाधीनं चलति अस्य मुख्य उद्देश्यं सुष्ठु शिक्षा अस्ति इष्ट भाषायाः शब्दानां स्थानं विद्युत् सञ्चारणे पटलस्य नियतं भविष्यति इति विधिः अस्ति तद उच्चारणं सम्यक् भवति तदा एव उक्तः पंक्तिः अस्ति एवं विधभावेन प्राद्योगिक ध्वनि विज्ञाने बहुविधाः प्रयोगाः दृश्यन्ते उपसंहारः ध्वनि विज्ञानं भौतिकशास्त्रस्य एकं महत्वपूर्णं शाखा अस्ति यत्र ध्वनेः उत्पत्ति प्रचारः प्रसारः गुणधर्मः अध्ययनं क्रियते अस्मिन् विज्ञानक्षेत्रे ध्वनेः विविध प्रकाराः तस्य वेगः आवृत्तिः अनुवादः विश्लेषणः इत्यादिकं विशदीकर्तुं क्रियते पाणिनि व्याकरणस्य अध्ययनेन व्याकरण दार्शनिक ग्रन्थानां अनुशीलनेन च प्रायोगिक ध्वनि विज्ञानस्य प्रभुतमुपयोगं भविष्यति तद् आधारीकृत्य विश्वे अन्ये जे विद्वांसः सन्ति भाषाविज्ञानिनः सन्ति सर्वे स्व क्षेत्रे अपि ध्वनि विज्ञानम् उररीकृत्य स्व शास्त्रस्य अपि वर्धनं कर्तुं पारयिष्यन्ति ध्वनि न केवलं मानव जीवने अत्यावश्यक अपितु प्राणी जीवने अपि विशेषं स्थानं धारयति संचार साधनेषु संगीतादि क्षेत्रेषु च महदुपकारं बुध्यते आधुनिक तन्त्रज्ञानस्य युगे सोनार अल्ट्रासोनिक अन्धजनानां कृते ध्वनि संचारण प्रणाली अपि इत्यादिषु ध्वनि विज्ञानेषु उपयोगः महत्वपूर्णः अस्ति अतः ध्वनि विज्ञानं केवलं भौतिक सिद्धान्तेषु सीमितं न अपितु तस्य उपयोजनं चिकित्सा अभियान्त्रिकी वास्तुशिल्पं संगीतं संचारं प्रणाली च इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु व्यापकम् अस्ति भाविनि अपि अस्य विज्ञानस्य विषये गवेषणया नूतनाः प्रविधयः विकसिताः भविष्यन्ति इति निश्चितम् धन्यवादः मम प्रकल्पः समाप्तः अस्तु अस्तु अत्यन्तं हि समीचीनम् आसीत् शोधपत्रं परन्तु अस्मिन् पटले ये प्रपत्र प्रस्तोतारः वर्तन्ते तेषां कृते अयं नियमः वर्तते किं शोधपत्रस्य वाचनं न करणीयं
शोधपत्रस्य यः मुख्यः विषयः अस्ति, यः मुख्यः बिन्दुः अस्ति, तर्हि मुख्यबिन्दोः उपस्थापनमेव करणीयम्। इदमेव अलं भवति। तर्हि अक्षरशः शोधप्रपत्रस्य वाचनं न करणीयम् इति मदीया मतिः वर्तते, मदीयः निर्देशः वर्तते। विनोदकुमार मलिक महाभागस्य कृते एकः प्रश्नः अस्ति, यतो हि भवन्तः जानन्ति एव शाकटायनस्य मतमस्ति सर्वे शब्दाः धातुजाः भवन्ति। ये शब्दाः भवन्ति, शब्दानां कारणं तु धातुः एव, परन्तु मदीयः प्रश्नः अस्ति धातोः कारणं किमस्ति। सर्वे शब्दाः धातवः भवन्ति एव, शब्दानाम् उत्पत्ति कारणमेव धातु, परन्तु धातोः किं कारणम्? धातोः कारणं भवति ध्वनिः एव। ध्वनिना एव धातोः सृष्टिः इति वक्तुं पार्यते। तत्र यदि ध्वनिः न स्यात्, यथा साहित्यिकाः वदन्ति काव्यस्य आत्मा ध्वनिः, सा ध्वनिः प्रतीतपदार्थकलोके ध्वनिः इति उच्यते। यथा वैयाकरणेन पतञ्जलिना स्वस्य पस्पशाह्निके एव प्रतिपादितं, प्रतीतपदार्थके लोके शब्दः ध्वनिः इति उच्यते। सा ध्वनिः परवर्तिनिकाले तत्र धातुरूपेण सृज्यते। अनन्तरं धातु सर्वे शब्दाः धातुजा, धातुतः वयं शब्दं प्राप्नुमः एव। अस्तु, समीचीनं समीचीनं, धन्यवादः श्रीमन्, प्रणामामि। प्रणमामि। अनन्तरं नेक्स्ट मेहुल नतुभाई पुरोहित। नमो नमः। उपस्थितोऽहम्। लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णु वेंकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणश्च कृपावलम्बम्। समेभ्यः नमो नमः। रवः श्रूयते खलु? श्रूयते, खलु? अग्रे सरतु। धन्यवादः। अस्मिन् ऑनलाइन माध्यमेन सत्रेऽस्मिन् समुपस्थिताः सत्राध्यक्षाः, सञ्चालकाः तथा च प्रस्तोतारः, समेभ्यः नमो नमः। अहं पुरोहितो मेहुलः। अस्मिन् सत्रे मम विषयोऽस्ति मध्यमव्यायोगे उपनिषद्विचारः इति। कालानुरूपं प्रतिधावितव्यम् इति धिया शीघ्रतया अहं शोधसारांशम् एव वदामि। उपनिषद्विषये वयं सर्वे जानीमः एव, ईशकेन कठप्रश्न मुण्डमाण्डुक्यतित्तिरिः ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश। मूलरूपेण अनेक उपनिषदः सन्ति, तत्र 10 उपनिषदाः मुख्यत्वेन अस्माभिः गृह्यन्ते। अत्र नः संस्कृत साहित्ये नीति धर्म ज्ञान विज्ञान संस्कार संस्कृति तत्त्वानां चावबोधनाय अनेके ग्रन्थाः विद्यन्ते। यथा चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति, ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यकग्रन्थाः उपनिषदः शिक्षाकल्पादयः वेदाङ्गानि वेदान्तादि दर्शनशास्त्राणि पुराणानि काव्यानि नाटकानि च। संपूर्णे संस्कृत साहित्ये धर्मः जीवनस्य उद्देश्यं कर्तव्यं मोक्षं च इत्येतेषु विषयेषु बहु विस्तृतं चिन्तनं कृतं विद्यते। यथा ईशावास्योपनिषदि अपि उक्तमस्ति, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृश्यते। अत्र सत्यमिति परं तत्त्वमेव। तत्र संस्कृत साहित्ये तत्त्वानां विषये उक्तमस्ति, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा यत्त्वभास छल जाति निग्रह स्थानानां षोडश पदार्थानां तत्वज्ञान निःश्रेयसाधिगमः इति। अतः उपनिषद विचारः प्रायः समेषु नाटकेषु काव्येषु पद्येषु अपि विद्यन्ते एव। तत्र एकः विचारः मया कृतः मध्यम व्यायोगे उपनिषद विचारः। व्यायोग विषयेपि वयं सर्वे जानीमः एव, यथा व्यायुज्यन्ते अस्मिन् बहवः पुरुषाः इति व्यायोगः। तत्र कविभास विरचितं मध्यम व्यायोग इति रूपकं नाटकम् एकं। तत्र कतिपयस्थलेषु अस्माभिः उपनिषद विचारः लभ्यन्ते। यथा प्रायः तैत्तरीयोपनिषदः शिक्षावल्याम् उपदिष्टः एकः उपदेशः वर्तते, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। अयमेव विचारः मध्यम व्यायोगे घटोत्कचस्य संवादे दृश्यते। यथा मातुर्नियोगादपनीय शङ्कां, यथा घटोत्कचः गच्छन् आसीत्, एवञ्च ब्राह्मणपरिवारं दृष्ट्वा सः विचारयति, ओहो अयं तु ब्राह्मणाः, एते सर्वे तु ब्राह्मणाः, पृथिव्यां तु खलु पूज्यतमः ब्राह्मणः इति। तथापि मातृदेवो भव, मातुः आज्ञा वर्तते आहाराय कोऽपि एकं मानुषं गृहीत्वा आगच्छतु
इति आज्ञया मातुर्नियोगादपनीय शङ्काम् इति वाक्येन मातृदेवो भव इति भावः तत्र दृश्यते। अन्ते यदा हिडिम्बा घटोत्कचम् उपदेशयति अये अयं तु अस्माकं भीमसेनः अन्ते व्यायोगान्ते भीमसेनस्य परिचयः जायते तदा हिडिम्बा वदति घटोत्कचं प्रति कि अयं तु पिता तदापि तदा तत्र घटोत्कचस्य वाक्ये पितृभक्तिः अपि दृश्यते। यथा घटोत्कचः भीमसेनं प्रति वदति अस्य पुत्र अपराधस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि इति। एवञ्च मातुः एव सेवायै घटोत्कचः अन्यानि अपि वाक्यानि वदति। यथा मुञ्चत्वेष इति यदि मे पिता स्वयं आगत्य मां ब्रवीमि तदापि अहं न मुञ्चामि कारणं गृहीतो मातुः आज्ञया इति। अत्रापि मातृभक्तिः मातृदेवो भव इति भावः मध्यम व्यायोगे दृश्यते। एवञ्च मध्यम व्यायोगस्य यदि मूलस्रोतः वयं पश्यामः तदा ऋग्वेदस्य सुनः सेपाख्यानं। तत्रापि सुनः क्षेप सुनः पुच्छ सुनः लाङ्गुल इति त्रयपुत्राः आसन्। अत्रापि अस्मिन् मध्यम व्यायोगेपि ब्राह्मणस्य पुत्राः त्रयः तत्र मध्यमः। अतः पितॄणां मातॄणां च रक्षा पुत्रैः करणीया इति अस्माकम् उपनिषद् बोधः वर्तते। तत्रापि मध्यमः पुत्रः आगत्य कथयति युवा विषयेपि उपनिषदि उक्तमस्ति युवास्य साधुः दृढिष्ठः बलिष्ठः इत्यादि वाक्यानि वर्तन्ते एव। तत्रापि मध्यमपुत्रः। एवञ्च ब्राह्मणानां रक्षा करणीया तत्रापि क्षत्रियाणाम् इति धर्मः। अतः क्षत्रियरूपेण तत्र भीमसेनः सः अपि ब्राह्मणपुत्रस्य स्थाने स्वगन्तुम् इच्छति इति भावः प्रकटयति। एवञ्च चरैवेति चरन् वे मधुमिन्दति इति भावानुसारं घटोत्कचः एव चरन् आसीत्। एवञ्च सः ब्राह्मणपरिवारम् अप्राप्नोत् इति। अतः वयं पश्यामः चेत् मध्यम व्यायोगे कतिपयस्थलेषु अनेन माध्यमेन अनेन रूपेण यथा अनेन रूपेण उपनिषद् विचाराः दृश्यन्ते। सुनःक्षेपाख्यानानुसारं समानतया उभयोरपि स्थानयोर्मध्ये मध्यमपुत्रस्य वार्ता वर्तते। यथा सुनःक्षेपाख्याने मध्यमः सुनःक्षेपः तथा च मध्यम व्यायोगे मध्यमः ब्राह्मण द्वितीयपुत्रः भीमसेनश्च। अतः सप्रमाणं वक्तुं शक्यते यत् व्यायोगे अस्मिन्नपि वेदानाम् उपनिषदाञ्च विचारः कतिपयस्थलेषु दृश्यते इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। शुभङ्कर अग्रे सारयतु। अस्तु, ओके। इदानीं नेहा मदन। Yes, sir. A very good afternoon to one and all. Sabhi ko namaskar. Myself Neha Madan, assisting professor from Guru Ramdas College of Education from the Delhi, affiliated to IP University. The title of my presentation. Can I share my presentation, sir? Yes. Is it visible, sir? Yes, ma'am. I think it's visible, yeah. Yes. You can The continue. title of my research, which I have done related to the critical thinking, I have tried to examine an intersection of the mindfulness and the critical thinking in the 21st century in perspectives of contemporary education. As we all know that the NEP 2020 is focusing on, just wait. Now it's visible? Yes. Yes, that as we all know, the national education policy is focusing on developing a different kind of the skills among the learners, like for development of the holistic education, and the other objectives are being mentioned. And of them, the most important 21st century skill which has been emphasized in NEP 2020 is the development of the critical thinking skills, which are the most basic requirement along with the theoretical concepts. The basic 21st century skills which has been emphasized in the NEP 2020 and which were earlier being also said in NCF 2005 are basically critical thinking, creativity, collaboration, and the communication. And of them, the critical thinking is the most important skill which need to be developed among the 21st century learners. So in the present paper, I have tried to find out the intersection and the two-way contribution of the critical thinking towards the mindfulness and the mindfulness towards the critical thinking. As the critical thinking mainly involves the ability of solving the problem, reasoning, and the evaluating. On the philosophy which critical thinking works gives in the nutshell the major three domains, that is the problem solving, your ability to reasoning, and evaluating.
And mindfulness, as we all know, it is being in the present position, being in your present moment, paying the attention to what you are listening, what you are observing in the present moment, not being judgmental. So how by practicing the mindfulness skills in the school education scenario, we can enhance the critical thinking skills of the learners. Further, as we can see that the mindfulness training make the individual, the organism more aware. It increase the attention of the person and it increase the acceptance of the one, that is through the self-reflection and non-judgmental attitude. In the same way, when we are more mindful, our cognitive processes, our ability to pay attention, metacognition, emotional regulations also keep on increasing. And the outcome is that our learner will have the better behavioral and social emotional outcomes with the help of the critical thinking skills. Related to this topic, I have done the few review of the literature, which we will be highlighting on the mindfulness as a foundation for the critical thinking skill. In one of the research which I came across, which was being conducted by Lan and Ding in 2024, it emphasized on the role of the mindfulness on the relationship between the critical thinking and well-being, which was being conducted on a learner of the China, and it was being found through the questionnaire analysis done on a statistical basis that the critical thinking has a positive influence on the well-being through the mindfulness, and in way the mindfulness contribute to the development of the critical thinkings of the learner. In the same way, hence, for the present study, the title Examining the Intersection of Mindfulness and Critical Thinking in 21st Century in the Perspective of Contemporary Education. Following objectives were being taken for the study. I have tried to find out the role of mindfulness and critical thinking in process of learning, and what are the various provisions which are made at the school education level for development of critical thinking skills with the execution of mindfulness process. Examine the intersection between the mindfulness and critical thinking skill in the process of learning by analyzing the current education system, and on the basis of which few suggestion strategies have been given to maximize the intersection between the mindfulness and critical thinking skill. For the present study, the sample which has been taken comprised of the 10 senior secondary and secondary schools of the East Delhi area, which include the government and the private school. Sample for the study include the students of the 6 to 8 classes and the teachers from the schools of the East Delhi, which has been a part of the study. The sampling technique which has been focused as a purpose sampling technique for the selection of the schools and classes, and for conducting the questionnaire with the teachers of upper primary classes who used to practice the mindfulness skill. Random sampling technique has been used for the focus group discussion, which was being done with the students. The few items which were being selected make the part of the self-designed questionnaire were like, how often do you engage your learners in the mindfulness practices? Another questions item which were being included were like, which mindfulness techniques basically teachers used to practice with their learners in the classroom? To what extent the teachers agree or disagree that with the practice of the mindfulness, the learners have become more attentive and they are able to better utilize their critical thinking skills. So these were the few items which were with the part of the study. On the analysis, it was being basically found that the measure of the responses have been in the favor that the more than 90% of teacher practicing mindfulness in the classroom teaching learning process on daily basis through simple breathing exercises, yoga, and communication. By the conduction of the mindfulness exercises, the teachers have reported the students have increased their concentration power. They remain more active. They are being in the to their present, and they don't accept anything without the critical thinking. They're better able to use their logics, and they have become more good decision makers about their own decisions and to decisions to be taken for the welfare of the group. These were the few interpretations which came out as a result discussions with the learners, that the learners have become more thoughtful reflection. When one of the learners said when they feel stressed during the exam, now they take the deep breath. It helps them to think clear, focus on solving the problems logically. So here we can see that how mindfulness is contributing to critical thinking, and critical thinking make you more mindful. It has increased the self-awareness. In another statement, it was being found that whenever my friend and I disagreed on the history topic, I took a moment to listen fully before responding. That means we are not responding to the situation just like that only. The power of the reflective thinking increases with the mindfulness. At the last, it can be concluded from this paper that the more opportunities should be provided for increasing the intersection between the mindfulness and the critical thinking, which enable leads to the better mental well-being of the learners and enhancing the opportunities for these exercises. As it has been said that mindfulness plays a significant role in improving the cognitive and academic processes, mitigating the stress and leading to the holistic development of the learner. Thank you. With this, I conclude my paper. Yes, Neha, it's a very nice paper. It's very informative
innovative as well. Thank you. Is it hard or it is hard? HEARTFUL. That is Yes. basically focusing on your soft skills area, I think. You are No. Daj is the founder of Heartfulness Institution, okay. and the birthplace of Heartfulness Institution is India only. The center is established in Hyderabad itself. Okay. So you can go through the Heartfulness, and Heartfulness is also providing so many insights about critical thinking and meditation, spiritual practices as well. Because Sure. mindfulness it has been originated from the USA. So why not we have to adopt the indigenous kind of technology? Sure. You can go through the Heartfulness, and I think in that way your paper will be more enhanced. And once you will do the collaborative study between Heartfulness and mindfulness. Sure. So this is my suggestion for you. Sure, sir. I will take into the consideration. Thank you, sir. Yeah, thank you. Next. Next, Nandita Baroi. Nandita Baroi. Yes, sir, I'm present. Okay. Sir. My name is Nandita Baru. My topic is Upanishadic Shanti Mantra and their relevance in modern society. The Upanishad, considered the philosophical essence of Vedas, represent one of the oldest spiritual traditions that emphasize self-realization, universal harmony, and inner peace. These texts are deeply rooted in the content of Shanti, that is peace, which is invoked through Shanti mantras recited at the beginning and end of the Upanishadic teaching. Shanti mantras serve a dual purpose. They remove obstacles to learning and invoke peace at physical, mental, and cosmic levels. In the modern world, which is increasingly characterized by stress, mental health crisis, social unrest, and environmental degradation, the relevance of the Shanti mantras. Nandita ji, am I audible? Are you listening me? Please come to the conclusion only. What is the modern relevance of Shanti mantra depicted in Upanishads? Please come on research findings. Only conclusion? Yeah. Okay. Shanti mantra of the Upanishad are not ritualistic recitation, but timeless invocations that the deepest spiritual, ethical, and philosophical aspiration of humanity. Shanti mantras Om Shana Bhavatu, Om Purnamida Purnamidam, Om Bangmi Manasi, Om etc. express prayers for protection, unity, inner strength, integrity, mental clarity, and universal harmony. They embody the ideals of mutual respect between teacher and student, the integrity of the thought and word, dedication of truth, and the pursuit the holistic knowledge that integrates both intellectual and spiritual wisdom. Next. In today's world, marked by increased stress, conflict, and these ancient Shanti mantras offer profound guidance. They encourage a spirit of cooperation rather than competition, mindfully learning over mechanical knowledge. This emphasis of harmony at levels personal, interpersonal, and cosmic aligns closely with contemporary movements in mindfulness, value-based leadership, and sustainable development and peace education. Furthermore, the triple invocation of Shanti addresses the universal human need that for balance in the face of external obstacles and inner turmoil. In modern education, these Shanti can foster an environment of mutual growth and ethical scholarship. In personal life, they can inspire collaboration with integrative and personal spiritual practice
They serve as centering tools for cultivating focus, clarity, and companion. Thank you, sir. This is my conclusion. Thank you. Next. Next, Dr. Pankaj Kumar Mahan. Mahan. Namaste to all. Dr. Pankaj. I am here, sir. Namaste to all. Okay, sir. You will continue. Vasudevam Sutam Devam Kansa Charuramardhanam Devaki Paramanandam Krishna Vande Jagatgurum. Namaste to all. I, Dr. Pankaj Kumar Mahana, Assistant Professor in Sanskrit, Guest Lecturer, Dharanjara University, Odisha. My topic is that critical thinking and philosophy in Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is profound philosophical dialogues between Lord Krishna and Arjuna, offers to unique format to critical thinking and philosophical inquiry. Through its 18th chapter, the Gita encourages the emotional and external dilemmas, ethical conflicts, and metaphysical relatives. Arjuna treats the battlefield become a critical relation inquiry where Krishna teaching pokes deeper reflection and critical engagement. This paper explores how is Gita Sevhat, the manual and critical inquiry and philosophical reflection fostering an analytical mindset while providing a path to self-realization. This topic, why Srimad Bhagavad Gita or Lord Krishna, Gita dialogues between Krishna and Arjuna unfolded inquiry to ethical responsibility to natural of self and the path of liberation. I have used the research methodology, textual analysis, comparative analysis, ethical and philosophical inquiries, and show me. This is the main topic. Lord Krishna said that Gandivam sastrute haspatvam tvachaiva paridahyate nacha saknam avasthatum dhramati vachame manah. Nimittani chapatyami viparitani kesava nacha sreya anupastyami hatva sajano mahave nakanchye vijayam krishnam nacha rajyam sukhani cha king no rajyena govindam king bhave jivite nava. My limbs fail, my mouth is pressed, my body trembled, and my hair stand on end. I see evil oms, O Krishna, and I force no God from killing my own. Krishna invited. In the next, the philosophy force inquiry. Krishna responds to Arjuna's dilemma in not respective interest to engage Arjuna diacritical dialogues. Krishna said, Asancha anyasachastam no pragyavadascha bhasase gatanusana gataswastam nanu sachanti panditaha. Ethical and duty, dharma, the metaphysics of self, the atma, philosophy of action, that means karma yoga. The Krishna encouraged Arjuna to engage in the critical reasoning to determine the right courses of Bhagavad Gita, the third chapter, slok 35, Sriyan sadharma viguraha paradharma sanushtitan sadharmi nidhanam sreyo paradharma bhayavaha. Krishna, the knowledge of self and reality, Krishna teaching extend beyond ethical reasoning and compares metaphysical inquiry into the nature of self, Atma, the universe, that means Prakriti, and the supreme reality means Brahma. Please conclude the paper. Yes, sir. Please conclude Yes, sir. your. Yes. I conclude my paper.
The Bhagavad Gita offers the timeless model for critical thinking and philosophizing that demonstrating the intellectual inquiry, ethical reflection, and spiritual realization in interview. By guiding Arjuna through a dialogue process of questioning, analyze, and Krishna exemplified the reasonable inquiry can be lead to moral clarity and external wisdom. The Gita teaching remain relevant, addressing contemporary ethical dilemmas and an outcome, the critical thinking and philosophical reflection essential in navigating the complex modern life. Thank you, sir. Thank you. Next. Arajit Das, Yes, I am listening. please on your video also. Okay. Good afternoon, everyone. Myself, Arijit Das, Assistant Professor, Gangadharpur Mahavidya Mandir, affiliated to Calcutta University. Today, my presentation topic is Vedantic thought of Swami Vivekananda and present society. Swami Vivekananda formulated his own philosophical thoughts and social plans based on the omnipresence and perfection of Brahma. He was the first to comprehensively expand the framework of impact of Vedanta in present society. He firmly believed that whatever the current society was, it would have to rise above its narrowness through the proper application of the principles taught in Vedanta. The principles of Vedanta are not meant to remain in textbooks only. They have to be applied in various fields of society. The reason for India's decline is not the lack of ideals, but the lack of sincerity to turn the ideas into action. And it is to remove that lack Swami Vivekananda, who came as the savior of the suffering in the most difficult times of human society, has infused the social stream with new glory and nectar with the influence of his invincible power. He has established the Vedanta of the caves and forest in the society and has made a special effort to apply it at all levels of society. Vivekananda's practical Vedanta is so useful to everyone because it is suitable for daily life. Swamiji wanted that even the common people in the busy life of society should live their daily life and work activities inspired by the light of Vedanta. Everyone should understand this goal of Vedanta, eternal peace in the midst of intense activity. He said, our work is nothing compared to the countless Akshuhini attempts of Arjuna on the field of Kurukshetra, yet in the midst of this world. Department. Yes, sir. Sir, you go ahead. Continue, Okay. sir. Continue. Yes, in the midst of this war, he found time to listen to the highest philosophy and turn into action. So it is worth mentioning that it can be done in our relatively easy and comfortable life. Swamiji says, if you desire wealth, then put this Advaita into practice. Wealth will come to you. If you want to be learned and intelligent, then apply Advaita in that direction and you will become a wise person. If you want to attain liberation, then you have to apply that Advaita in the spiritual realm. Then you will become liberated. You will attain the supreme bliss of Nirvana. The only mistakes was that till Advaita, Vedantic thought was applied only for spirituality, not in any other field. Now is the time to apply it in the life of action of a fisherman thinks of himself as a part of Brahma, then he will be a good fisherman. If a lawyer thinks himself as a part of Brahma, he will be a good lawyer.
In addition to the unique Brahmanism presented in the Vedanta philosophy from the form of Shama, Dano, Titiksha, Uparati, Shraddha, and Samadhan, as well as the sadhan such as Tapasya, Brahmacharya, Satya, etc., also described here. Swami Vivekananda has asked everyone to achieve this sacrifice, detachment, selflessness, love, etc., taught in Vedanta for beautiful and virtuous life in every aspect. Swamiji means that the word effective means that it is possible to achieve in life. The ultimate goal of Vedanta, moksha, is not impossible but can be attained through the practice of action without desire. He who realizes these Advaita principles of self relationship, Ayam Atma Brahma, which is found in Brihadaranyaka Upanishad, this means this soul is Brahma. Aham Brahmasmi, I am Brahman. Tatmavasi, you are the Brahman. He attains the midst of the worshipping or serving everyone by seeing Brahma in all beings, which is Swamiji's Shivogane Jeev Seva. Lord Krishna clearly says in the Bhagavad Gita, Lavante Brahma Nirvana Mishayaha Shina Kalmashaha Chinna Dvaitha Jatatmanaha Sarva Bhuta Hite Rotaha, which is found in 5th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Vivekananda has expressed the mantra of serving the living being through the knowledge of Shiva from his Guru, Sri Sri Ramakrishna Paramahansadev, বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজি যে ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, which is found in in the book of Baniyo Rachana, 6th part, page number 269. Acharya Shankara also called this body a temple and the soul residing in the body as Sadashiva. Constantly thinking and meditating on the impersonal Brahma is also a Vedanta or effective Vedanta that requires practice. Swamiji used the phrase practical Vedanta in various senses, such as practical Vedanta, Vedanta in working life, application of Vedanta in practical life. But he discussed it extensively in this sense, namely the application of Vedanta in working life or in social human life or living in light of Vedanta, according to Vedanta, transform into action. Every moment of human spiritual life and worldly life will be ethical. When a teacher enters a school with the same attitude with which a saint goes to a temple, the service he provides to the students gathered in the classroom contains devotion, sincerity, and love. In this way, if students, teachers, doctors, businessmen, everyone sincerely tries to fulfill their responsibility of serving the society, then the quality of life will improve every day, every month, every year. This is called Vedantic revolution. And lastly, I want to conclude. If people initiated in this education, no child will send their parents to an old age home. The biological prosperity of man is achieved through the development of his physical body. But the more pure a man is, the more cooperative the mentality becomes, and above all, the more compassionate he becomes, the more he learns to feel the pain and problems for others as his own. Only then will his spiritual progress be possible. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, can I go? Yes, please. Okay. I request to all the participants, please off your video. Someone on video. So I request all the participants, please off your video. Okay, next, Arati Bhatnagar. Are you here? Arati Bhatnagar. Okay, next, Devashish Sarkar. Are you here? Devashish Sarkar.
So again, I am announced some Sir, participants. myself, Dr. Vishal Bhatt. मेरा छूट गया था अगर. Okay, sir. Okay, sir. You can continue, sir. May I, sir? Yes, sir. जी. You can continue. इस सभा में उपस्थित समस्त विद्वजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं. मेरे आज का जो विषय है वो दर्शन शास्त्र, भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रमुख आधार स्तंभ. इस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा. वेदों, उपनिषदों और धर्म ग्रंथों आदि से संपन्न भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रमुख आधार स्तंभ दर्शन शास्त्र को मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं. दर्शन शास्त्र केवल एक विषय न होकर एक विद्या है. महर्षि शुक्राचार्य ने 32 विद्याओं की चर्चा करते हुए इन समस्त मीमांसा, तर्क, सांख्य, सिद्धांत, योग, इन समस्त दर्शन को उसमें सम्मिलित किया है. तो इस दर्शन साहित्य की बात करें तो दार्शनिक चिंतन के बीज हमें वैदिक साहित्य में प्राप्त हो जाते हैं. तो वेद का जो पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, इसमें प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ इसके उदाहरण. हम आज जो हमारा जीवन दर्शन है, मन को नियंत्रित करना बहुत परम आवश्यक है. इसको सब सुख और दुखों का कारण स्वीकार किया गया है. जैसे तर्क संग्रह ग्रंथ में लिखा है, सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना. तो दार्शनिक चिंतन से परिपूर्ण हमारा वैदिक साहित्य है, वो वेद कहता है कि जो मन है, तन में मनः शिव संकल्पम वस्तु. तो हमारा मन सदैव शुभ विचारों का चिंतन करे और उसमें किसी प्रकार की कोई गिरावट ना है. और दूसरी बात है, अगर जो ईश्वर उपनिषद की हम बात करें तो मनुष्य जैसे आज धन एकत्रित करने के लिए एक होड़ में लगा हुआ है, तो उस संदर्भ में दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करते हुए वेद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगतेन त्यक्तेन भुंजीतः मा घृत कस्य स्विधनम. ये धन किसी का नहीं है, त्याग भावना से हमें इसका उपभोग करना चाहिए. और त्याग की बात करें तो जो उपनिषद साहित्य है वो भी दर्शन साहित्य, दार्शनिक विचारधारा से परिपूर्ण है. और उसमें भी जब हम बात करते हैं तो कठोपनिषद भी यही कहता है, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, धन से किसी की तृप्ति नहीं हो सकती. और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो संवाद है वो अनेक गूढ़ विषयों की चर्चा की गई है. उसमें आत्मज्ञान क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्या धन संपत्ति से अमर पद को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों की वहां पर उसका उत्तर देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं कि संसारिक धन संपत्ति और मोह माया के वशीभूत होकर मोक्ष और अमर पद की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती. तो उन्होंने वहां पर आत्मज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया है. तो उपनिषद साहित्य के पास यदि हम वेदांत का दर्शन करते हैं तो वेदांत पढ़ने का जो अधिकारी है, केवल हम उसी पर ही यदि कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसमें अधिकारी के लिए क्या क्या दिया गया है. कहता है, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपततो अखिल वैदर्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरा सरम नित्य निमित्तिक प्राश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्पशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधक संपन्ना परमाता. जितनी बातें वेदांत के अधिकारी में गिना दी गई हैं, चाहे वो उसने वेद वेदांगों का अध्ययन किया हो, केवल अध्ययन न किया हो, उसके अर्थ को भी अधिगत किया हो, काम में और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया गया हो, नित्य नैमित्तिक प्राश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करे, और उसके 4 प्रकार के जो साधन हैं, जो नित्य अनित्य अनित्य वस्तु विवेक, अमूत्र अर्थफल भोग विराग, शम आदि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व. तो इन सब बातों को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो एक स्वच्छ और निर्मल और एक आदर्श जीवन जीने की पद्धति हमें ये दर्शन साहित्य सिखाता है. तो वेद उपनिषद भी कहता है कि स्वाध्यायात मां प्रमदितव्यम, किसी प्रकार का उसमें हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए. तो श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो उसमें भी त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः, तो काम क्रोध लोभ इन सबको परित्याग करने की जो का उपदेश है हमें भगवद गीता से प्राप्त होता है. तो ये समस्त दार्शनिक ग्रंथ हमारे लिए एक ऐसी जीवन पद्धति को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिसका पालन करते हुए हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं. तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इन्हीं भावों को मैंने विस्तार पूर्वक अपने शोध लेख में प्रस्तुत किया था, तो वो आपको मेल कर दिया हुआ है. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Good afternoon. Can I present the paper? Your name? Ashwatthama, 15 number.
15 number, I think your next session, I think maybe. Sir, this is the first session, 10 o'clock, 11 o'clock session. Okay, okay. You can continue. Okay. Okay, can I? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Can I share the PPT or? Okay, okay, ma'am. You can share. Good afternoon to everyone. So right now I'm not, sir, is visible, sir? Yes, yes, yes. Yes, ma'am. Okay, thank you. Today my topic is critical thinking and Kannada Vachanas. Myself, I'm Ashwathamma, that Associate Professor, alum in Arts, Science and Commerce College, Bangalore. In the critical thinking, I'm choosing Basavana's philosophical teaching. The 12th century, Vachanakaras were a group of poets, mystics, and philosophers in South India who contributed significantly to the religious and philosophical landscape through their devotional and philosophical poetry. Their works are part of a broader tradition known as Vachana literature, and they were primarily associated with the Lingayat movement or Veerashaivism, a religious and social movement that emerged in the 12th century under the leadership of Basava and his followers. Here is a study of the philosophy of the 12th century of Basavana Vachanakaras. Basavana's philosophical teachings. Basavana was a 12th century philosopher, social reformer, and poet who led the Sharana movement and played a key role in shaping the Vachana literary tradition. His philosophy was deeply rooted in equality, social justice, experiential spirituality, and the dignity of the labor. He rejected caste-based discrimination, ritualistic worship, and hierarchical structure in religion and society. Below is a detailed account of Basavana's core philosophical teachings supported by his vachanas. Basavana's philosophical teachings. First is Kayaka, work as worship. Basavana believed that honest labor was the highest form of devotion to God. He emphasized that spiritual growth comes not from mere rituals but from sincere work done with dedication. This principle was revolutionary as it encouraged people from all castes and professions to find dignity in their work. One of his vachanas says, Kudara Sangama Deva, work is heaven itself. Those eat without work are sinners. This teaching dismissed the belief that only priests and scholars could attain salvation. Instead, Basavana argued that all individuals, regardless of their profession, could attain spiritual fulfillment through their work. Rejection of caste system and social equality. Basavana was a radical thinker who opposed the rigid caste system and advocated for a society where everyone was equal regardless of birth. He rejected the idea that spiritual enlightenment was reserved for a particular class and instead promoted a community of equals, Anubhav Mantapa, where people of all backgrounds could come together and share their spiritual experiences. One of his vachana, the rich will build temples for Shiva. What shall I, a poor man, do? My legs are the pillars, my body the temple, my head the golden tower. O Lord Kudala Sangama, I offer you my worship. Here, Basavana asserts that the human body itself is a temple, neglecting the need for grand religious.
Experience, Anubhava over rituals. Basavana believed that true knowledge of God could not be attained through rituals or scriptures alone. Instead, direct experience, Anubhava, was the key to understanding Shiva. He criticized elaborate temple rituals, idol worship, and priestly intermediaries, arguing that Shiva resides within every individual, can be realized through devotion and self-discipline. Then one of his vachana, the one who has realized the divine within has no need for temples and idols. Why look outside when Shiva resides in you? This philosophy is similar to Advaita Vedanta, but unlike classical Vedanta, Basavana emphasized social reform and ethical living over metaphysical speculation. Devotion through simplicity and purity of heart. Basavana's philosophy promoted simple living and purity of thought as essential aspects of devotion. He condemned those who outwardly appeared religious but lacked moral integrity. One of his vachana, wear holy beads around your neck but cheat the world. Can Kudala Sangama accept such devotion? Here Basavana warns against hypocrisy in religious practices. True devotion, according to him, comes from sincerity and ethical living rather than external appearances. Women's empowerment. Basavana was also a pioneer in advocating for women, her rights. He encouraged equal participation of women in spiritual and social life, which was a groundbreaking idea in the 12th century. Akka Mahadevi, a prominent woman saint and philosopher, was given equal status in Basavana's movement, proving its commitment to gender equality. One of his vachana, O Shiva, your grace does not depend on gender, but on devotion and sincerity of heart. Legacy and influence. Basavana philosophy deeply influenced the Bhakti movement, the social reform of Karnataka, and modern egalitarian thought. His emphasis on equality, self-respect, and labor dignity remains relevant in discussion about social justice. Many of his teachings resonate with Mahatma Gandhi's principles of truth and non-violence and Dr. B.R. Ambedkar's fight against caste discrimination. Conclusion. Basavana was not just a religious thinker, but a social visionary. His philosophy of work as worship, equality, direct experience of the divine, and ethical living challenged the rigid structures of his time and continues to inspire millions today. His vachanas are not merely poetic expression, but revolutionary philosophical insights, advocating for a just, free, and equal society. His teachings remain a beacon of hope in the pursuit of human dignity, truth, and righteousness. His philosophy can be summed up in a single line: let us live with truth, let us work with sincerity, and let us worship with our hearts. So thank you, Onanda, to give this opportunity for us to present the paper. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, can I present the paper? Your name, ma'am? Sir, Dr. Navdeep Kaur, my co-author, she has a name in the second number. Okay. Sir, can I present? Yes. Okay, sir. Okay. Myself, Monica Rai, as a research scholar in the Department of Education, Guru Nanak Dev University, Amritsar, and Dr. Navdeep Kaur is my co-author. So my topic is using design thinking to solve real-world problems, a pedagogical approach to encourage students' growth and participations. So providing students with opportunities to wrestle with and engage with messy real-world problems can be challenging in traditional higher educational courses.
So, however, for students in helping and applied professions, engaging with challenging problems in a sportive environment is critical to developing their skills and confidence. So, this paper presents an innovative pedagogical approach that utilizes design thinking in the context of a community engaged applied learning experiences to guide students as they worked on a real problems for real organizations. So design thinking is a student-centered method to interacting with students and teachers in a constructivist learning environment that transforms students' learning process to link up real-world experiences, problem solving and creativity foundations and multiple reflections and reconstructions through the use of Hesse-Plattner model, which follows the 5 steps. Empathy, define, ideate, prototype and feedback. In this method, firstly, teacher will empathize the students for a problem through a storytelling method or environmental exposures. Then students define the problem with the help of teacher through brainstorming method, and after that create a prototype in a collaborative mode or in a digital form very effectively. At the end, on the basis of the model, teacher provide feedback and suggest some major changes in the model. नाम की बोले है कि Yes, sir. Because it is an iterative process. So design thinking allows students to face ambiguous and unsuccessful situations comfortably by implementing the 5 steps progressively to test solutions or prototypes for solving big problems. So this is a practical and student-centered learning method where students work in an experimental way. In other way, design thinking deals with project-based learning, which establish the connection between inner and outer worlds and allow students to develop the artifacts, charts, presentations that reflect and communicate their emerging understanding. So through these activities, students develop the understanding of concepts and content, creativity and problem solving abilities, which is the foremost need of the 21st century. So it helps to prepare children to deal with the complexities of the future problems. It is mostly a volatile, uncertain, complex and ambiguous world, and we need to equip our children with the skills of creativity, problem solving, decision making, responsibility and collaboration to help them find innovative out-of-box solutions through hybrid mode of learning with the help of the design thinking method. Thank you, sir. Thank you. Next, Mohammad Aftabuddin. Mohammad Aftabuddin, are you here? Yes, I'm here. Okay. প্রথমে আমি বলে নিতে চাচ্ছি আপনাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি বাংলায় বলতে চাচ্ছি। আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে খুব ছোট করে বলবো। তো আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে রজনীকান্ত সেনের ভক্তিগীতিতে ঈশ্বর ভাবনার অনুসন্ধান। তো আমরা নিশ্চয়ই মোটামুটি সবাই জানি যে রজনীকান্ত সেন ছিলেন পঞ্চকবিদের একজন। বাকি পঞ্চকবিরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, DL রায়, অতুল প্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম এবং রজনীকান্ত সেন। তো আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রজনীকান্ত সেনের ওই ঈশ্বর ভাবনার যে বৈচিত্র্যময় প্রভাব তার উপরে। তো আমি যে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করছি, তো সেখানে মানে ঈশ্বর ভাবনার উপরে বেশ কয়েকটা বিষয় আমি অ্যানালাইসিস করে বের করেছি। তার মধ্যে একটা হলো প্রকৃতির সাথে ঈশ্বরের একাত্মতা, ভক্তিবাদ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের ভাবনায় আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরের অগম্য রহস্য এবং মানুষের সীমিত বোধের প্রকাশ, ঈশ্বরের অদৃশ্য সত্তার প্রতি আকুলতা, দুঃখ রোগে ঈশ্বরের সান্নিধ্য, ক্রমবাদের প্রভাব। তো রজনীকান্ত সেন তার জীবদ্দশায় 3 ধরনের গান লিখেছেন। একটা হাসির গান, দেশমাতৃকা যেটাকে আমরা স্বদেশী গান বলি, এবং ভক্তিগীতি। তো হাসির গানের ক্ষেত্রে উনি প্রভাবিত হয়েছিলেন আরেক পঞ্চকবি DL রায়ের মাধ্যমে, কিন্তু DL রায়ের মতো হাসির গানে তিনি খুব একটা বৈচিত্র্য আনতে পারেননি। আর ওনার স্বদেশী প্রেমের যে গান, সেই গানগুলো খুব একটা বেশি কালজয়ী হয়নি। এর একটা কারণ হলো যে
স্বদেশী গান রচনার ক্ষেত্রে রজনীকান্ত সেনের একক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারেননি। এর কারণ পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে, ফলে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রচিত হয়েছে সমসাময়িক অসংখ্য কালজয়ী গান। তবে বঙ্গভঙ্গর বিরুদ্ধে স্বদেশী পণ্য বর্জনের প্রেক্ষাপটে রজনীকান্ত সেনের কালজয়ী একটি স্বদেশী গান হলো মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেড়ে ভাই, দিন দুঃখিনী তার বেশি আর সাধ্য নেই। তবে সবকিছু ছাপিয়ে রজনীকান্ত সেন তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন ভক্তিগীতিতে। ভক্তিগীতি আবহমান বাংলার চিরায়ত প্রাচীন সংস্কৃতির অংশ হলেও তা চিরহরিত। এর কারণ ভক্তিগীতি বিষয়টি শাশ্বত এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভক্তি যুগান্তরের। বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে এই ভক্তিবাদের বিষয়টি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের এক পবিত্রতম অংশ। অখণ্ড বঙ্গ অঞ্চলে মধ্যযুগের শাক্ত এবং বৈষ্ণব পদকার রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বাউল ও সহজিয়া ধারার সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে এবং নবজাগরণ পর্বে রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিএল রায় এবং অতুল প্রসাদ সেন সহ আরো অনেক কবি সমৃদ্ধি লাভে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে রজনীকান্ত সেন বাকিদের মতো বহুমুখী প্রতিভার প্রদর্শন ও চর্চায় হয়তো সচেষ্ট ছিলেন না। গীতিকবি হিসেবে সঙ্গীত রচনা এবং গায়ন ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো স্বাক্ষরও তার পাওয়া যায় না। রজনীকান্তের সীমাবদ্ধতাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মিলবে। তিনি অনবদ্য নিপুণতায় রচনা করেছেন ভক্তিগীতি। রজনীকান্ত সেনের গানে ঈশ্বর ভাবনার বহুরূপী রূপ এবং বৈচিত্র্য যেভাবে ফুটে উঠেছে তা এক কথায় অনন্য। ঈশ্বরের মহিমার প্রতি ভক্তিগীতি গান এবং গীত কাব্যে চিত্রায়িত করেছে। রজনীকান্ত সেনের ঈশ্বর ভাবনার কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা। রজনীকান্ত সেন ভক্তিবাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের বৈচিত্র্য রূপের সন্ধান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান। তিনি জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ঈশ্বরের লীলা হিসেবে বিবেচনা করতেন। তারপরের বিষয় আসছে ভক্তিবাদ এবং ব্যক্তি সম্পর্ক। রজনীকান্ত সেনের ঈশ্বর ব্যক্তি সত্তা হিসেবে কল্পনা করতেন। ঈশ্বরকে কখনো তিনি পিতা রূপে, কখনো বন্ধু রূপে, কখনো সখা কিংবা প্রেমিকা রূপে কল্পনা করেছেন। এই জন্য তার গানে বারবার ফুটে উঠেছে ঈশ্বরের প্রতি অগাধ প্রেম, নিঃশর্ত মুক্তি এবং আত্মসমর্পণের আকুতি। যেমন একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যায়, সখা তোমারে পাইলে আর বৃথা ভোগ সুখে চিত্ত রহে না আর। তারপর হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভাবনা, এই যে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার। রজনীকান্ত সেন ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি সাধারণ মানুষের সরল ভক্তি প্রকাশের একজন প্রতিনিধি। তিনি জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে ছিল সহজবোধ্য। উদাহরণস্বরূপ একটি গানের কথা প্রসঙ্গ আনাই যায়, তা হলো অব্যাহত তোমারই শক্তি গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া, তোমারই প্রেমে এক হৃদয় আর হৃদে পরে লুটাইয়া। ঈশ্বরের অগম্য রহস্য এবং মানুষের সীমিত বোধের প্রকাশ। রজনীকান্ত সেনের প্রজ্ঞার সমস্তটা দিয়ে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির চিন্তাকে কল্পনা করেছেন। সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের অগম্য রহস্য ভেদের চেষ্টাও করেছেন। তিনি একসময় আবিষ্কার করেন সাধারণ মানুষের ঈশ্বর সাধনা থেকে অনেকটা দূরে। তিনি তার গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সীমিত বোধের সেই জিনিসটি তুলে ধরেন। অসীম রহস্যময় হে অগম্য, হে নির্বেদ্য, শাস্ত্র যুক্তি করিবে কি তোমার রহস্যভেদ। ঈশ্বরের অদৃশ্য সত্তার প্রতি আকুলতা। তিনি ঈশ্বরকে যেমন প্রকৃতি এবং ব্যক্তি সত্তায় কল্পনা করেছেন, তেমনি অদৃশ্য সত্তাতেও কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি এই আকুলতা তার গানে বর্ণিল রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন তার একটি বিখ্যাত গান হলো, আমি অকৃতি অধম বলে কিছু তো কম করে মরে দাওনি, যা দিয়েছ তারই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি। তারপরে বিষয়টা আসে দুঃখ রোগে ঈশ্বরের সান্নিধ্য। যাপিত জীবনে একসময় রজনীকান্ত সেন গলার ক্ষত রোগে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ উনি একটা সময় তার গলায় ক্যান্সার হয়, যার কারণে অমানসিক যন্ত্রণায় তার ঈশ্বর চেতনা স্থিমিত করার বদলে আরো যেন ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তার অনেক গানের বাণীতে তিনি দুঃখকে ঈশ্বরের দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিংবা গ্রহণ করেছেন, কিংবা তার ভাবনার মাধ্যমে করুণ সুরের ধারায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন, এ উৎকট ব্যাধি দিয়ে এ সংকটে ফেলে নিয়ে বুঝাইয়া দিলে যবে সকল চিকিৎসাতীত না হইলে নিরুপায়। এই গানে তিনি ইচ্ছার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতি দানকে তিনি তো আমি যে জিনিসটা বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হলো যে রজনীকান্ত সেনের ভক্তিমূলক গানগুলো আসলে বাংলা কাব্যগীতি, সাহিত্য এবং আধ্যাত্ম সঙ্গীতের এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। তিনি কেবল সঙ্গীত রচয়িতা এবং গীতিকবি ছিলেন না, তিনি একজন ক্ষণজমা দার্শনিক ছিলেন। তো উনি ওনার দার্শনিক তত্ত্বটা আসলে ওনার গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, এবং এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করার যে দার্শনিক তত্ত্ব, তার যে শ্রেষ্ঠত্বের
টিচার বা তার যে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা তার প্রতিযোগী তিনি কিন্তু নিজেই ছিলেন। তো আমার বক্তব্য এতটুকুই ছিল। তো এই হচ্ছে আমার টপিক আর কি। Sir, can I go or stop, sir? Actually, Guruji is waiting for lecture, sir. Yes, Yes. why not? Why not? So, So, sir, my humble, yeah, any question is there, please, Muni Swami DKG. Yeah. You are muted, sir. Please unmute yourself. Sir, my paper was in the beginning only, but I was unable because of university meeting. Now can I present it, sir, in 2-3 minutes? Yeah, within 5 minutes, sir. Within 5 minutes. We have crunch of time. Please go ahead. Yes, sir. Thank you so much, sir. Very good afternoon to one and all. I am Muni Swami from South Karnataka. I am working as an assistant professor in one of the BED colleges. And now I am going to share my screen with the, yes, I am going to share my screen with my presentation. Yes. Sir, my topic is, yes, sir. 1 minute, sir. I am sharing. Yes. I think my screen is visible. Sir? Yes, visible. Yes, thank you so much, sir, for the presentation opportunity. Now, in my topic is cultivating critical thinking and philosophizing. In that, in introduction, I have discussed about critical thinking means analyzing, evaluating, and reasoning logically. Second part of our seminar topic, very beautifully organizers have arranged philosophizing. Not only critical thinking is important, philosophizing is also important. Engaging in intellectual inquiry. Then what is the importance of these two? Critical thinking and philosophy, how important they are. They are essential for education, not only, but also for governance and ethics. In my introduction, in my full paper, I have discussed all these things. Again, theoretical framework and philosophical traditions. What are the theories that rule these things? And also, what are the philosophical traditions? Socrates' questioning is one of the very beautiful thing in which dialectical reasoning. What is Indian Nyaya logic? Logical epistemology. What is Western versus Eastern philosophical perspectives? These are the things I discussed in the first very introduction chapter. What is questioning? Systematic questioning, understanding. The purpose of questioning itself is to understand. Applications. What are the applications of systematic questioning in legal, philosophical, and educational fields? I will quickly come to Indian Nyaya logic. Structured system of logic we have had. 4 parameters or 4 pramanas we had followed: perception, inference, comparison, testimony. That's why NEP 2020 really beautiful, because we are going through all those aspects of our beautiful age-old traditions. After Indian Nyaya logic, I will come to critical thinking in education. What are the challenges and strategies? Rote learning versus analytical thinking. We in India, because of very different problems, we have adopted rote learning, old tradition, but analytical thinking is far beyond ineffective. So inquiry-based learning, dialectical reasoning. After that, what is inquiry-based learning and dialectical? Encouraging curiosity. It will enable debate, real-world case studies. That's the beauty of inquiry-based learning. What is overcoming rote learning aspect? Curriculum reform. Then only we can overcome rote learning. Teacher training, another aspect. Assessment redesign. Next, I have discussed in my paper, technology and critical thinking. AI and digital platforms impact reasoning skills. Definitely, it's an advantage. What are the benefits? Faster knowledge access. Definitely. Personalized learning, it is also there. What are the pitfalls? Misinformation and cognitive biases. Again, there is a drawback. Lastly, online discourse and cognitive development. We in BA colleges, we are always
telling about cognitive, affective, psychomotor. What is cognitive? Social media, fact checking is important. Misinformation challenges are revolving around it. What are the benefits of pitfalls technology? Research, collaboration, interactive learning. What are the pitfalls? Over reliance, over dependence, reduced to deep thinking. Nowadays, students in even primary high school level, they are reduced in deep thinking aspects. Next, critical thinking in governance and ethics, because my paper is not only in education, my paper deals with critical thinking in governance and ethics. In ensuring policies are rational, ethical, and evidence-based, transparency should be there and citizen engagement should be there. Next, very briefly, what are the ethical challenges in decision making? Balancing competing values like privacy versus security, especially in the era of social media. Privacy is actually a threat. Philosophical reasoning frameworks, utilitarianism, and deontology. Next thing, global discourse and rational argumentation. Role in diplomacy, conflict resolution, policy making. And I am come to conclusion. Key takeaways are critical thinking is essential for education, governance, and ethics. Reforms are needed to integrate analytical reasoning in learning. What are the recommendations? I am coming to end of my topic. Recommendations for policy and education. Recommendation in education, as I already said, curriculum reform is need of the hour. Teacher training is another aspect. What are the recommendations for governance? Evidence-based policy making. Simply doing the policy for the sake of legislatures, not done, not it is suitable. Evidence-based policy making, civic engagement. Then what are the aspects of technology recommendations? Digital literacy should be there. Ethical usage should also be there. Lastly, references I have used AP 7th edition. And lastly, I am thank you very much for giving me this opportunity. Really, this is a wonderful and beautiful experience for me. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Sir, remaining one participant is there, so we can call, sir. Who is there? Devashish Sarkar. Okay, but only 3 minutes will be given, not more than that. Okay. Devashish Sarkar, are you here? Devashish Sarkar? Devashish Sarkar? So thank you for everyone. I think he is not here, so he can present in the next technical session as well. So from the core of my heart, I congratulate, I appreciate to each and every paper presenter. They presented very nice. Presentation was thought-provoking. They have touched the various dimensions of critical thinking and philosophizing. And somebody has presented his research paper, social dimension of critical thinking and philosophizing the object. Somebody has presented educational dimension of critical thinking and philosophizing the object. Then philosophical dimension also has been covered. Then the religious dimension has been covered. Spiritual dimension has been covered. So each and every paper presenter, they have presented the paper. Really, I would extend my hearty congratulations in this August gathering. And without taking much time, so once again, I would like to repeat, generally the paper presenters belong to Sanskrit field. So briefly, because my Guruji, Professor K. Dharnidharan sir is here, so I would not like to take much time. My humble pranams to sir. Sir is my Guru Nam Guru. So we have to listen to him because sir is a stalwart in the field of Indian philosophy. So whatever sir will speak, that will be the, we can say, the authority for everybody. We have to follow in our present academic endeavors.
So, but briefly, I would like to tell in Sanskrit language, I would like to tell, because generally the paper presenters belong to Sanskrit field. That in critical thinking is the critical thinking can be named in Sanskrit mananam अथवा तार्किकम चिंतनम. मननम कथम भवति? मननम तु उपपत्तिभिः. तर्हि यदा तार्किकम चिंतनम भवति तर्हि तार्किक चिंतनस्य वैशिष्ट्यं किम्? तार्किक चिंतनस्य वैशिष्ट्यं भवति विश्वमस्ति, विश्वोः वस्तु वर्तते, वस्तोः प्रमाणमीमांसया किं भवति? बुद्धिस्थ रूपेण वस्तोः उपपादनं भवति. यत् किमपि वस्तु अस्ति, संसारस्य वस्तु अस्ति, प्रमाणमीमांसया वस्तोः अंतःकरणं क्रियते, अथवा आंग्ल भाषायाम् उच्यते इंटरनलाइजेशन क्रियते. प्रमाण मीमांसया प्रत्यक्षं प्रमाणेन वा, अनुमान प्रमाणेन वा, उपमान प्रमाणेन वा, शब्द प्रमाणेन वा, तथापत्या अनुलब्ध्या. तर्हि एतैः प्रमाणैः किं भवति? अस्य संसारस्य यत् किमपि वस्तु अस्ति तर्हि वस्तोः किं भवति? बुद्धिस्थ संसार रूपेण परिवर्तनं भवति, परिणमनं भवति. तर्हि पुनः बुद्धिस्थं यत् किमपि वस्तु अस्ति तस्य वस्तोः मननेन, तार्किक चिंतनेन किं भवति? दार्शनिकत्वं भवति. अर्थात यह संसारः बाह्य रूपः अस्ति तस्य संसारस्य बुद्धिस्थ संसार रूपेण प्रमाण मीमांसया परिणमनं भवति. पुनः बुद्धिस्थ संसारस्य तार्किक चिंतनेन किं भवति? तार्किक चिंतनेन दार्शनिक संसार रूपेण विपरिणमनं भवति. पुनः दार्शनिक संसारस्य भाषा शास्त्रेण, व्याकरणेन किं भवति? भाषा संसार रूपेण भाषात्मक संसारः यः भवति तेन रूपेण विपरिणमनं भवति. यः भाषात्मकः संसारः अस्ति सः एव भाषात्मकः संसारः भारतीय ज्ञान परंपरायाः भवति आधारभूतः. भाषात्मक संसारस्य उपरि एव ज्ञान परंपरा आश्रिता अस्ति. तर्हि अस्माकीना या ज्ञान परंपरा अस्ति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरायाः किं भवति? निष्पत्तिः संस्कृत वाङ्मय रूपेण दरीदृश्यते. अतएव तार्किक चिंतनस्य दार्शनिक संसारस्य रूपेण विपरिणमने अत्यंतं ही वैशिष्ट्यम् अस्ति. तार्किकं चिंतनं विना बुद्धिस्थ संसारस्य दार्शनिक संसार रूपेण विपरिणमनं न भवितुं शक्यते. यदि दार्शनिक संसार रूपेण विपरिणमनं न भवितुं शक्यते तदा भाषात्मक संसार रूपेण तर्हि विपरिणमनं न भवितुं शक्यते. यदा भाषात्मक संसारः न भवति तदा भारतीय ज्ञान परंपरा या काचित् ज्ञान परंपरा अस्ति तस्याः ज्ञान परंपरायाः विकासः न भवितुं शक्यते. अतएव तात्विक चिंतनस्य, दार्शनिकत्वस्य महत् वैशिष्ट्यम् अस्ति. तर्हि एभिरेव वचोभिः पौनः पुण्येन भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भौतिभ्यः सर्वाभ्यश्च आशीर्वचांसि विरमामि. धन्यवादाः. धन्यवादाः आचार्याः. धन्यवादाः कक्षताः. शरणमय महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य पक्षतः आचार्यान् धन्यवादाः. धन्यवादाः. इदानीम् अस्माकं संगोष्ठ्यां द्वितीयं सत्रमस्ति. अत्र उपस्थिताः सन्ति पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः डॉक्टर के धरेन्द्र महाभागाः. Now I am invite for welcoming address Hyasi Chatterjee Madam, Assistant Professor, Department of English, Sarnamai Agendra Mahavidyalaya. Thank you. I would like to thank all the paper presenters of the previous session, and especially to Professor Anil Pratap Giri for chairing the session so well and for his closing comments, and for agreeing to be with us in all our programs. Thank you so much, sir.
And I would now like to introduce another distinguished guest in our midst, Professor K.E. Dharanidharan, who is a professor in the Department of Sanskrit in Pondicherry University. As Professor Giri has already pointed out, he is a stalwart in his field and he has a long experience in teaching. He has various publications, books, as well as journals. He has also had many scholars under him. He has supervised various scholars and he has been awarded many prizes, which of course attests to his greatness in his field and his expertise in his area. Thank you so much, sir, for being with us today and for agreeing to be present amidst us. I request you to please kindly deliver a few words. স্যার আমি দেবাশিস উপস্থিত আছি, দেবাশিস সরকার। হ্যাঁ, আপনারটা মানে अगले सत्र में आप करिएगा। প্রেজেন্ট করবো স্যার? না এখন নয়, এই লেকচারটা হয়ে যাক, দেন ইউ ক্যান প্রেজেন্ট। गुरुजी का व्याख्यान सुनिए। हाँ हाँ गुरुजी थोड़ा शुरू करें? रुके सर गुरुजी, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए आपका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भाई। इदानीम् अस्मिन् सत्रे मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति आचार्याः धरेधर महाभागाः। एते आचार्याः तु पूर्वे तु काशी हिंदू विश्वविद्यालये आचार्यरूपेण कार्यं कृतवन्तः। कुर्वन्ति कुर्वन्ति। तत्परम् इदानीं पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे कार्यं कुर्वन् सन्ति। एते आचार्याः न्याय वेदान्त वेद व्याकरण मात्रिका शास्त्रेषु निष्णाताः पंडिताः सन्ति। एते आचार्याः इदानीं पर्यन्तं प्रायशः 7 शोधपत्राणि 10 पुस्तकानि प्रकाशितानि कृतवन्तः। आचार्यस्य समीपे इदानीं पर्यन्तं 55 शोधछात्राः सदकार्यं कृतवन्तः। आचार्यं संगृष्ट्यं हार्दिकम् अभिनन्दनं सश्रद्धं नमस्करोमि। इदानीम् आचार्यं निवेदयामि तेषां विषयम् उपस्थापनाय। शुरू करें? हाँ गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ। गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यश्च नमो वाकम् अधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपती जगतां पति। नमस्सभायै